गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, वेयर यू सिटिंग राइट नाउ. लोगों को सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगता है, सो आई एम गोना टॉक द ट्रूथ. दिस वीडियो इज गोना बी डैम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, एंड यू विल गेट द बिटर ट्रुथ आउट. Indian education system is the most bullshit education system ever in the world. Okay, it's okay. मैं अगर जेल भी चला जाऊँ इस वीडियो के बाद तो it doesn't matter, but I have to tell you the facts, the bitter truth. ऐसा है कि आज की तारीख में MBA और इंजीनियरिंग या फिर कोई एजुकेशनल कॉलेज खोलना इज बिकम अ बिजनेस बिकॉज यू गेट you just need to have good rapport with politicians, with few businessmen, get some money, build a building, get students, admissions karao, and then what? You don't guarantee them job, right? You just tell them placement assistance milega and all. So there is no guarantee of job basically, okay? So easy है ना? You get students, उनको सिखाओ, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद गेट फ्यू कंपनीज फॉर द HR, बोलो नहीं हुए सिलेक्ट, यू आर नॉट केपेबल. इजी है ना, क्योंकि केपेबल बनने के लिए दीज आर द फैक्ट्स. बाय द वे मैं ये बता रहा हूँ कि 85% लोग इंडिया के, आवर कंट्रीज 85% पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, राइट? दे आर अनएम्प्लॉयबल. अनएम्प्लॉयबल मीन्स उनकी औकात नहीं है एम्प्लॉय बनने की, राइट? दिस इज व्हाट द सर्वे सेज. आई एम नॉट टेलिंग दिस, ओके? वेरीफाइड ऑन गूगल. यार प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल विच आई हैव रियलाइज्ड, ओके? किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब इंटरव्यू में ना 85% ऑफ द टाइम्स it's the attitude that matters of the person, and 15% is the facts and figures, that लेकिन एजुकेशन सिस्टम में पूरा उल्टा है. 85% फोकस है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे और 15% बचा हुआ टाइम सैटरडे संडे का, अरे वोकेशनल कम्युनिकेशन का कोर्स कराओ, चलो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराओ, समथिंग लाइक दैट. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. There are a chunk of people, there are some good people, some really amazing institutes which are producing great guys, but where are they? Where are they? Canada, US, UK, Germany, somewhere else. Because they have realized there's no worth of sitting here, and that's the problem. हमारी 50% से ज़्यादा लोग population जो है, that is youth, under 30. And look at it, अगर आपकी आंखें आज नहीं खुलती है ना, तो 20 साल के बाद आप खुद को कोसोगे यार, why shouldn't I take the action on it? And हमने यही किया है. Listen, 25 to 30 lakh students every year are getting into serious depression. Okay, report है मेरे पास. Every hour, as we speak right now, and while this video gets uploaded, every hour there is one student who's committing suicide because of depression, because of not getting job, because of not getting money. That's the biggest problem. क्योंकि बॉस आप कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट, कितनी भी अच्छी इंजीनियरिंग सीख लो, the logic says knowledge is getting obsolete every year. Okay, the fundas which you use, let's say marketing fundas that you used about 2 years back are no more, no more valid anymore, because the world is changing, the world is growing. And ऐसा है ना कि कोई भी कॉलेज में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में there is no focus on right attitude, perception building, decision making, emotional intelligence, mind mapping. ये चीजें कौन सिखाएगा? ये चीजें जिंदगी सिखाती है. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. कम ऑन, इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ऑलराइट, सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव. ठीक है, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू मेक दिस चेंज विथ यू और विदाउट यू. वी आर गोना डू इट. ऑलराइट, वी वुड लव टू डू इट विथ यू. ओके, तो ऐसा है, वी हैव ब्रॉट समथिंग कॉल्ड एज अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एजुकेशन. ऑलराइट, इट इज कॉल्ड edutainment, education with entertainment. Now doesn't mean we are going to dance. Okay, get it clear. We are going to imbibe certain skills or skill sets, or some learnings, जिससे ना किसी इंसान का फाउंडेशन क्लियर होगा, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे. ऑलराइट, एंड that's the whole problem. I believe fundamentals are not really clear. ये क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, what is it going to be? The entire program is all activity based. The entire program is all on mind mapping, right attitude building, because guys, attitude is everything. All right, and I believe in it. I don't know about you. So basically we are doing one event, the third event actually of the year. It's called I Am Mad. That means I am making a difference. If you want to call mad crazy, it's okay. Crazy लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं और बाकी सारे morons उनकी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं. So we don't mind being called crazy. We are crazy, no issues. I Am Mad is the event that is happening on 27th May.
The point is very simple. The point is very simple. आपको लोनावला स्टेशन पे पहुंचना है. You have to find your clue. You have to find your team through certain clues, okay, which I'm not going to reveal right now. And you have to reach the location. That's your first task. And let me understand. Let me see if you can make it there. If you really have it in you. अगर वहाँ लोकेशन तक पहुँच नहीं पाए तो thank you so much. And this time the clues are going to be tough. Okay. Second, पूरा दिन 8 hours is fully packed with activities. And this program is only restricted to 30 people. 30 लोग. All these 30 people will be interviewed before coming to the program by a form. You will have to fill the form, and on the basis of that, you'll be chosen. Yeah, there is a fee attached, about some 3,200 rupees, but that includes your breakfast, lunch, high tea, and everything like that. That's a hotel charge. Come on. And we are bringing some of the most amazing learnings which will change the entire education system. If you're interested, come 27th May, register yourself to IMMAT 2018 Season 3. Okay, I'll see you there. Thank you so much.